गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो लास्ट क्लास के बाद आपने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग की related with some good variables for your study, or you are happy with the topic whatever you have selected. कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड किया था? ओके, ठीक है, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है ना कि we take the class and next time वो दूसरा lot of students आता है. Many times it happens. So please keep the class interactive. So I am assuming कि आप लोगों ने अपना variable whatever you people have decided, you have taken that variable. Clear? सब लोग decided at this stage of time? Yes. तो अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर. We often say it review of literature when we talk it in broad terms, but when we talk about specifically our chapter 2, we say review of related literature, because now we are specific to our variables and topic. Now question is कि हम किस चीज का रिव्यू करते हैं? What we used to review in our thesis. Okay. Okay, but it should be in your topic. So everyone, one thing is sure कि everyone will do their own review. सब अपना अपना review करेंगे. Now plagiarism कब आया था? Anyone is having idea? Plagiarism की धाराएं कब आई थी? Act. You people are aware of the plagiarism? What does that mean exactly? Copying others' idea or content. Others content. Okay, so suppose if in anyone thesis I am taking two line exactly from anyone thesis, fine. So it is plagiarism, yes or no? It is similarity. It's not plagiarism. Similarity is whatever we are taking. And suppose if I have taken those two lines and modified according to me and written it, then it is plagiarism or not? It is a plagiarism if I am not citing that person. मैंने अगर cite नहीं किया है, so see, I am talking about two things: taking the content as it is, and if I am citing it, right, taking two statements, sentences as it is, and then citing that person, तो वो plagiarism है कि नहीं है? जो plagiarism की धाराएं हैं, that is actually it's talking about similarity. So if it is similarity, then it will come into that act. And उसके जो laws हैं, तो if it is above 40%, if it I'm directly talking about the maximum जो penalty लगता है, penalty is in terms of money also. Your supervisor will be barred to take any of the research scholar if it is above 40%. So no supervisor will like to entertain such things. Fine. Secondly, you won't be able to do PhD for a number of years. आप नहीं कर सकते हैं. And the same is applicable in your masters also. So सबसे ज़्यादा problem students को review of literature में आती है as far as plagiarism is concerned, because you are talking about someone else content. Right? So we have to remember two things. First, we don't need to take the content as it is. पहली चीज. And secondly, we have to cite. We have to cite. Citation or references क्या होता है वो पता है आप लोगों को? What do we mean by citation and references? Anyone? You can explain one also. Reference, हाँ, yes, anything, हाँ. Okay, so when in the text, in a running test, whatever we are doing our PhD work, whenever we are entering the name of anyone, and maybe it must be in running or in paragraph, that is citation.
and to that citation at the end we used to give references में हम refer करते हैं उसको कि we have taken it from these many references, right? So it is very important कि we have to cite and we have to give references. Bibliometric and references का difference, anyone is aware what is the difference between bibliometric and bibliometry and this We write the numbers and also mentioning in the text. We also write in the text, but in bibliography we just write the in the at the end. See, in bibliography we used to we can refer many other sources. Suppose you people how many of you watch podcasts? Podcast देखते कोई भी कैटेगरी का, so we used to trust that content ना, है ना? If वो TRS पे आ रहा है, TRS शो है ना रणवीर अलावादिया का, तो we used to trust that content. और ध्रुव राठी का भी we used to trust the content ना, but how we can quote that thing जो उसने बोला, we can write it in a thesis, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? See, bibliography was there previously, उसको बहुत ज्यादा दिया जाता था importance because there were not ways of writing citation in different form. जरूरी नहीं है citation, you can do it in the whatever is there of research papers. Research papers का सिर्फ citation नहीं होता है. We can cite the videos also, we can cite the documentary also, we can cite the interview also. Personal interview अगर मैंने किसी का लिया, I can cite that also. I should know how I have to write the references. Like in social sciences we used to write references in APA format. तो APA format में references कैसे लिखना है वो हमें पता होना चाहिए. Then we can enter, but we can't enter किसी का भी हम नहीं डाल सकते हैं. But if we are referring n number of sources and we have not cited all, then we will enter it into the bibliography. Fine. But thesis जो होती है, it should have references, it should not have bibliography. That means whatever you are it will make your work more reliable and valid, because references जब आपने लिखा है, that means whatever sources you have gone, आपने जहाँ पे भी कुछ भी पढ़ा है, you are citing each and every. Suppose there are 200 references, that means there should be 200 citation in the thesis, right? So ये हम क्यों अभी discuss कर रहे हैं? Because your review of related literature is all full of citations and you have to do the references and everything. So before plagiarism, what people used to do, suppose I am working on emotional intelligence. ठीक है, एक one of my variable of my topic of the thesis is emotional intelligence. Then what I did, मैं शोध गंगा में गई, I have searched emotional intelligence, I got 50 theses related with that. I clicked any one of the thesis, I have taken their chapter 2 and I have taken all their review and copy it and paste it in my thesis. This people used to do it previously. ये लोग अपना chapter 2 ऐसे करते थे बहुत पहले, जो review नहीं करते हैं. Fine. So there are two things in review. We have to write it and we have to do it. Review अगर आप सिर्फ लिख रहे हैं तो 3-4 दिन में काफी कंप्लीट हो सकता है, but नहीं, you have to do it, you have to study, and for that in detail your guide can explain how you have to do the review. गाइड साथ में बैठ के रिव्यू नहीं करेगा, गाइड आपको बोलेगा रिव्यू इस तरीके से करो, because again there is a difference in doing the things as per your discipline. Sciences वालों में बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है. In social sciences you can as I said, the basic thing in any of the paper or any of the thesis, what is the first thing you'll go? So first you'll see the title. What can be the second thing you'll see? Oh, objectives. Fine. Objectives. And then if objectives are there, then it's always not, it's not necessary every time you have to see the research questions and hypothesis. Objectives आपने देखा. After that, what next thing you should see in anyone's paper, thesis or paper?
Methodology. Methodology क्या होता है? We have discussed it in a previous class. Which things are included in methodology? Research design, yes. Sample size, population, sample size, tools and techniques, what questionnaire, what was the target group, number of sample and what was the target group. So ये basic चीज हम research design में देखते हैं, research methodology में we used to see. Then what can be seen in anyone's paper? किसी में क्या देख सकते हैं हम लोग? Yes. Outcome. So outcome का what is the technical term for that outcome? Findings. Findings. Now you people are not acquainted with this word findings because in synopsis we don't have findings. Fine. हम हमारे M.Ed के students का we used to take the first trial synopsis आपको जमा करना है M.Ed तो purposefully we used to add one thing findings bracket में if any. तो कोई स्टूडेंट फाइंडिंग्स लिखकर आ रहा है तो हमें पता चलता है कि गलत सिनॉप्सिस बनाया है उन्होंने. Synopsis can never have findings. Fine. So purposefully we used to add that thing in there. So findings is the technical word. So you will get the findings and then you will get the results भी बोल सकते हैं and then conclusion and then suggestions are also important and educational implications also. Like in our social sciences, it's there educational implications. Many times funding agencies और acknowledgement किसी को कर रहे हैं specially वो भी आपको उस पेपर में देखना चाहिए. Fine. So these 5 to 6 things usually you have to see in every paper. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसी को देखेंगे. Fine. With the use of ChatGPT से you can give the variable to the ChatGPT and it will create lots of reviews. वो पूरा review बनाकर देगा. जैसे लिखना है ना with citations and proper वो बनाकर दे सकता है. But you know what, the results of ChatGPT are not accurate. When you will go to that reference, there is no such paper exist. वो paper exist ही नहीं करता. So don't use such tools. Use them smartly. मना ही नहीं use करने को, but don't stop reading. Reading जरूर करते रहिए. आप अपना review को reading नहीं करेंगे ना, your thesis will not have a strong base. And कभी भी time फिर से नहीं आता है. ना, you can't have college life again what you had in your graduation or what school life you had in your school वो वापस नहीं आएगी ना. तो similarly the time which you are getting for doing review it will not come back. So do it with बहुत ईमानदारी से करिए review. You should read the complete paper properly, make notes. Other things your guide can explain how you have to do the exactly. Now let's come to the so it's a collective body of works done by earlier scientists and published in the form of books or in the form of articles in journals or published as a monograph. Now what you are supposed to do in your review, what you are supposed to do, you have to collect all the works of your thesis. Fine. Now the point is that how you will collect. Like you have collected all the things, how you will place it. Review को place कैसे करेंगे? आपने सब collect तो कर दिया, so you should know how how you have to write it. तो लिखना कैसे है? As I told you, जो आपने 5-6 points discuss किया ना, it should contain it in the paragraph form. So if you are writing the title, suppose you are mentioning that Ramesh Kapoor has then work in XYZ thing. ठीक है, तो उसका टाइटल आप लोग को as it is लिखना चाहिए कि नहीं? If you will write as it is, it will come in plagiarism. So many people used to do what they used to do. They used to write it in inverted commas. Inverted commas चीज plagiarism में नहीं आती है.
Like whenever we are checking the similarity check करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर में, तो there are options to filter and all. So एक filter का option होता है avoid inverted commas. But thesis तो फिर सोचो कि थीसिस की स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन्वर्टेड कॉमा कर ले, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है. सो many people used to write title in inverted commas, but it is usually it's not that accepted also, but you have to write it in running, because you have to give space for the technical terms also. Technical terms को आप paraphrase नहीं कर सकते, so you have to 10% plagiarism is allowed. You have to give space for that 10% to keep it for your technical terms or variables, है ना. वहां पर आप उनको इसलिए avoid writing the same title. You can twist it in other form. जरूरी नहीं है टाइटल जिस तरीके से लिखा है उसका वॉइस you can change, or you have to take care that no 5 words should come. एक साथ 5 वर्ड्स आता है तो प्लेजरिज्म में ले लेते हैं. You have to take care of that thing, right? So every scientific investigation starts with a review of literature. Working with literature is an essential part of research process. It helps to generate ideas. Like when anyone has started review करना start किया किसी ने भी? एक दो लोग मुझे मिल रहे हैं. So that means when you people have presented the synopsis, you people have not done any of the review. I can assume that एक रिसर्च स्कॉलर के लिए दिस इज दी बहुत ये इट्स अ वेरी बैड हैबिट इफ यू आर नॉट रीडिंग, एंड इफ यू आर जस्ट थिंकिंग कि आई हैव टू कंप्लीट माय पीएचडी, सिर्फ वहां तक सोच रहे तो शायद थोड़ा काम चल जाएगा, बट वाइवा वोंट बी दैट इफेक्टिव. But if you are planning to do something more after your research, then start reading it from now. The person who is not able to generate new idea, fine, but the person is far better. That person is far better. The person who is not able to generate ideas is far better than the person if he is reading. Fine, if he is reading, is far better than the person who is able to generate good ideas but not reading. So reading is very important. If you are reading anything, or you will be able to write only when you are able to read. लिख नहीं पाएंगे आप लोग. और again I am saying कि it's not like that कि you should not use AI tools. You can use, but don't do it from the beginning itself. क्योंकि आगे का जमाना बहुत बहुत खराब होगा. मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं हम we are doing it AI को यूज करके we are doing everything. So your guide is also aware, the person coming, the panelist is also, everyone is aware. और वो चैट जीपीटी का और परप्लेक्सिटी का सबका पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है कैसा है, राइट? So it helps to generate ideas, because more you will read, you will get to know more things. Helps in developing significant questions and is regarded as an instrumental in the process of research design. Because when you see research design of several people, है ना, you will think about what type of research design you can apply. Gym में क्या होता है? Gym, when you go to gym ना, you see everyone is doing exercise, so you get motivated. If you are joining any of the coaching classes of the competitive exam, you get motivated when you go over there, right? So don't keep your motivation only up to the coursework classes. Get your motivation from these papers. Those who are doing more and more, ठीक है? जो जितना ज्यादा रीडिंग कर रहे हैं, जितना ज्यादा पेपर पब्लिश हो रहा है, पेपर्स रीड करें, get motivation from those people. So what is the purpose? It provides considerable information on the topic under research. Because if anyone is asking about your work and think that other person is an expert, so it is very important that you should know at least what that person is doing, और आपको अपनी लेवल तक का पता होना चाहिए, ठीक है? If you are blank
at the time of your RDC, what will happen? They'll say change the topic. They'll say change the topic. Then it could be a synthesis of a large number of information and put together subject wise for the purpose of understanding. I'll also later on discuss how, in brief, how you can write the paper on review of your review paper, because that would be your first paper. You have to get it published. So once you get your review paper done now, or you will get the MCA number, or it will get published in any of the good journal now, it will become difficult for the you. It is a proof that you have done the work. It is a self-evident that you have done the work. It might give a new interpretation of the old material, or combine new with the old interpretation. It is very important that when you read anything, or when you review the content related with your variable, you will get the old material. Maybe old material, yes, that is an old material, but you can interpret it in a new way, which is very important. In the current scenario, how you are interpreting those things, how you are presenting those things, or combine new with the old interpretation. If you are having your own new content, you can combine the old with the new. So always there is things, related traditional things, help and support the new content. It is a matter of fact presentation. You have to present it. You have to present the facts. Then it synthesizes and organizes the entire information in terms of its relevance and appropriateness to the topic of research. It will support your topic that already, yes, these people have done the research in the existing area or variable, and or it might trace to the intellectual progression of the field, including major debates. So it's not necessary every time review, whatever review you are doing, it is supporting your study. It can contradict also to your results I am saying, ठीक है? आप जो भी आपने रिसर्च किया, ठीक है, you have started with review, you have finalized your objectives, later on you are working on the tool, you are working on the methodology, you have collected the data, now you are showing the results. So at that time also you have to take support of the literature, already existing literature is there. Okay. Suppose I am saying that this mic is, it can go up and down, this mic. So how it can be proved? First तो I did it, ठीक है. लेकिन before doing, I must be having some literature with me. So I should have supporting studies also. And many times I can have contradict studies also. Okay, tell me, those women who are educated, their children are good at studies or not? Not necessarily. It just I can have a result which can contradict this point. What can be the other? If I'm saying the educated women, these children of educated women are not good at studies. What can be the reasons? आपको पता है वर्किंग वुमेन के लिए ये चीज कही जाती है. Short very time. It is being said, and you know what? For admission in good schools, na, they consider the education of the mother. But if they know that mother is working, they can give negative point in that, because they know she won't be able to give that much quality time. Again, it's not necessary that giving time, those who are housewives are giving quality time to their children. This is also not necessary. So contradict करती है चीजें. So if in my result, if I am getting one of my result, I am getting a working woman they are not good at studies.
I can have contradict result also. Okay, yes, this Rahim ने ये कहा था कि Rahim की study was saying that in working women children are good at studies. So I can have contradictory results also. Right? So it is talking about intellectual progression in that field, and it also talking about some major debates. तो it's not necessary always कि हम लोगों को एक ही साइड का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिले. So at this point of time you have to take care that your data is not manipulated. Students data भी manipulate करते हैं, ठीक है? तो you should not go for unethical ways for doing or completing your research. So difference between literature review and academic research report. So in the beginning you have to go with your in the beginning you have to go with your literature review. You will not do your academic research report. Academic research report is the complete form of, we can say, a research paper or a complete thesis or article. So under that, review is just a part of that. But when we talk about only review, so the main focus of academic research paper is to develop new argument. Academic research paper, we are talking about something new argument. But when we talk about literature review, we are talking about the already existing arguments in literature, whatever is being done. We will be summarizing those things and we will synthesize those things. It's, we can say, suppose उसको thesis assume करिए. It's a academic research report. Assume it as a thesis or a complete research paper. Right? So that complete research paper will have their objectives. We are not writing just an article. आपने ब्लॉग्स देखा है? ब्लॉग्स राइटअप्स होते हैं ना, तो वो उनके उसमें they will not write objective है मेरा ये hypothesis है, they will not write that way. They will just give paragraph और ये वो, ठीक है? It's just a write-up. It's giving some information. नहीं, blogs I am saying. This report, academic research report, or any of the thesis or research paper, they all have objectives. उनका objective है, और objective होगा ना, that means we are talking about some new argument. Some new argument. I can't have the objective which is already being done. उसकी क्या जरूरत है ना करने की? Like suppose example, I am saying I am preparing a very new recipe of pav bhaji. बहुत already existing है. ना अभी blogs देखते हैं जो they put anything in the food. चॉकलेट मैगी बना रहे हैं और वो फैंटा के साथ मैगी बना रहे हैं. Anything they are doing. So why they are doing it? They want to show something new. कुछ नहीं बचा है तो कुछ नया कुछ भी कर रहे हैं, है ना? But we are seeing it. तो उन लोगों को व्यूज से मतलब है. You will not try those things at home. ठीक है, will not feel like trying those things at home, है ना? वही देखने को will like, ठीक है? So research paper will have every time they will have new argument. कुछ नया पॉइंट होगा तभी तो पुराना क्यों पढ़ेगा कोई भी, ना? If any old thing is there, it can be with some new, through new way. कोई लैब में कुछ टेस्ट कर रहे हैं, कुछ नए तरीके से टेस्ट कर रहे होंगे, है ना? A research report will contain the literature review as one of its chapter. उसमें रिव्यू जरूर होगा, because no, we can't start. We should have some base. हम ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी नहीं स्टार्ट कर सकते, है ना? Then in research report, one uses the literature as a basic foundation and support for newer ideas and insight into the research topic of the interest. Supporting for the newer ideas, as I said, हमारी जो findings, whatever findings we get, those findings, it is very necessary to we should have some support of that finding. Supporting studies होना चाहिए उसका. It can have contradictory studies also, right? But supporting studies should also be there.
अभी आप आके, अब आपके डॉक्टर नहीं लगा है तो अभी आप क्या है रिसर्च वाले में, you if you are saying anything तो you should have support ना कि this literature is also saying this thing, इन्होंने भी ऐसा बोला and even my studies got these findings, ठीक है, but that study was contradictory and whatever you are quoting in your thesis ना, you have to, whatever you are citing in the thesis, you have to give references at the end, right? References or whatever review you are doing, it should be old or new, पुराना होना चाहिए, नया होना चाहिए, ठीक है, both, लेकिन both क्यों, why and how, what reviews we should do, old reviews and what we should do new. The old paper is the foundation of the paper. So we should know how the paper originated, how this thought originated. So ये सही है. But my new reviews what letters what. Okay, now At the other day we discussed about the different fields of education, and we discussed that all the fields came out from only one subject. It was based on the needs of the human being. So it is all need based. So we should know how this need arose in the past to study a paper. We should know the base or the foundation from where whatever technical we are doing, ठीक है, उसका हमें जरूरी है, तो we need to give references of some old references, but old references should be of the books. Try to have old references of the books. Or when yes, हाँ. Yes, correct. Correct. That is the reason for whatever the research paper. Suppose research paper we are doing ना, review सिर्फ research paper का नहीं होता है. किसका होता है review? Research paper, thesis, books. So books you should refer old books. उसको खाली साइट मत कर लीजिएगा. You should not only cite कि यहाँ से हमने इसका बुक ले लिया, आर्किमिडीज ने ये लिखा था, सपोज लिखा होगा, फाइन. You can get the book और आर्किमिडीज पे बुक मिलेगा. Maybe I don't, आर्किमिडीज का राइटअप जरूरी नहीं मिलेगा, फाइन. और कोई बताइए पुराना कोई. White papers. Yes, that we are coming in next slide. What type of reviews? I am asking कि कोई पुराना author बताइए, कोई बहुत पुराना in your area, in your discipline, any of the person who has given theory. Darwin. Darwin का suppose, ठीक है. So if you want to quote, तो चार्ल्स डार्विन की किताब है कोई, कुछ आइडिया है किसी को, है कि नहीं है? How you will get that book? Laws and theory of. Okay. So उनका book है. Okay. So how you will get that book? Book कैसे मिलेगा? Book पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? है ना, तो first you have to decide, you have to read it. Just quote अगर कर लोगे by chance, and if the if any of the panelists or any of the person coming in, he can ask you have read this book, from where you have got this book. पहला तो यहीं पे होगा, कहाँ से? आप लोग क्या बोलोगे? गूगल से मिला. From where you have got that book? हाँ? नहीं, library, it's not always, which library they can ask. Butler की one book is there of Butler, 4 philosophies. उसके इंडिया में सिर्फ 4 कॉपी है. One copy is there in Lucknow University Library. So from where you are getting the book, or you are referring only those books which are there in the library? So they'll ask in your this RDC, which is related with your first RDC, जहाँ पे आपको review show करना है. They'll ask which library you people have visited.
फिर आप बताएंगे कि वो एजुकेशन वाले हमारे स्टूडेंट एनसीईआरटी, वी हैव गॉन टू एनसीईआरटी, है ना? तो you should visit the library. Not say that we got it from Google. It's a crime to quote from Google. नहीं, गूगल पे नहीं मिलेगा. Any document which we are finding from Google. My question is it a crime to go? No. I'll tell you the sources from where we can get. ठीक है? Or it is fine. Is it a crime to quote? Answering Google it's not a correct answer. We have to अब हम बोलेंगे ना, हम इस मंदिर में गए थे, शिव जी को उस मंदिर में गए थे, ठीक है, वो उस दरगाह में गए थे. दैट पर्टिकुलर अजमेर की दरगाह क्यों फेमस है? There are particular places na where we get the things or whatever we want. There are places, so we should give the proper source from where we have got it. So if you are writing anything in your work, you should be aware what you are writing. अब वो चैट जीपीटी का ले लोगे ना, तो you know what, people used to prepare email through chat gpt, पता है ना आप लोगों को, है ना? तो दैट वो बहुत जल्दी में होता है. चैट जीपीटी को दे यूज्ड टू प्रॉम्प्ट के प्रिपेयर ईमेल, उसने करके भेज दिया, ठीक है, सेंड कर दिया. दे आर नॉट एबल टू आंसर, उसका रिप्लाई पूछ लेंगे ना एक एक वर्ड का कि व्हाई यू हैव रिटन दिस वर्ड. किसी के कंप्लेन कर रहे हैं या किसी को कुछ क्लेम कर रहे हैं, तो इफ आस्क ने ये क्यों लिखा, तो दे डोंट हैव आंसर बिकॉज वो चैट जीपीटी से बना है. अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ क्राइम टू यूज एआई, but you should use it smartly, है ना? You should be aware कि what was the procedure, book आया कहाँ से, book you have quoted कि you have read the book, that book was 50,000 की किताब थी, कहाँ से आई, from where you have got, library, which library, तो इंटीग्रल के लाइब्रेरी में it's there or not, so did you thought कि I should visit library of other university also, जाना चाहिए वहां पर, ठीक है? तो उसकी तैयारी करने में आप वहां पे बुक्स पढ़ने जा सकते हैं, ठीक है? और अच्छा मटेरियल होता है लाइब्रेरी में, राइट? सो लिटरेचर रिव्यू ऑन द अदर हैंड समराइजेस, सिंथेसाइजेस the many arguments in literature and the research findings gathered from such a review and puts forward arguments in favor or against of the particular topic and its findings. It helps, ठीक है? फाइंडिंग्स के फेवर और सपोर्ट के लिए करता है. एंड व्हाटएवर रीडिंग you people are not doing for your guide, you are doing it for yourself. तो ये चीज, and it is not necessary every time it should be connected with your thesis only. थोड़ा सा कुछ कोई लोग सोचते हैं कि मैंने फालतू में पढ़ लिया, ये तो मेरे थीसिस में काम नहीं आएगा, ऐसे सोच के नहीं पढ़ाई करिए. तो there are two things only which are useful for yourself only. दो चीज खाली होती है इंसान की, एक होती है एक्सरसाइज जो करते हैं तो खुद को ही काम आती है और किसी को काम नहीं आती है. इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज तो खुद को ही काम आएगा. एंड देन सेकंड इज रीडिंग, पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, इट इज हेल्पफुल टू यू ओनली. सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिव्यू? सो वी आर हैविंग जर्नल्स एंड बुक्स. बुक्स यू शुड रेफर ओल्ड वन, राइट? ओल्ड बुक्स आप लोग रेफर कर सकते हैं, न्यू भी कर सकते हैं, बट ओल्ड बुक्स आर authentic, they are having base of any of the content. Then already existing reviews already अगर उसमें किया हुआ है, you can review that thing also. You can go for abstracts also. Indexes are there. That is information is there. Internet में you can search. There are doctoral dissertation, supervisors and research professors. You can ask them. They are also source of if they have worked in that area. Like I said कि मेरा जो topic था उसके बाद मेरे को बहुत सारे collaborations के लिए आया, and then people those in India, those who are working with, they many of them they मुझे contact करके, तो I used to discuss them with them कि कैसे कर सकते हैं इस पर काम, और what other variables you can take with this topic and all, right? So we can always approach the supervisors, research professors and all
Then doctoral dissertation. So all the doctoral dissertation of our country are available on the Shodh Ganga. But all the doctoral dissertation of the world are also available in one of the website. आप उसको सर्च करिएगा जहाँ पर इंटरनेशनल डॉक्टरल डिसर्टेशंस अवेलेबल है. फाइन. वो क्या है? वो सर्च करिएगा. मुझे या तो अभी गूगल करेंगे तब देख लेंगे. ठीक है. So these are the different sources where you can get the information. They are reliable sources. Internet लिखा है तो इंटरनेट पे you have to be specific where you are going. You should not quote Wikipedia. पता है ना? Wikipedia में ऑप्शन होता है edit. So very smartly you people have taken content from that, copy it in your work and then edit किया, उसको change कर दिया. तो बोले plagiarism अब नहीं आएगा. Now these softwares are such like that. Turnitin में there is option of whether it is AI generated or not. बता देता है. And if you are thinking that you are smart enough, you have taken it from the AI से आपने लिया, Perplexity से लिया, ChatGPT से लिया, and then you are paraphrasing it in the keyboard, तो वो भी बता देगा कि it is being paraphrased from the this website. वो भी बता देगा. फाइन. तो वो बड़ा शर्मनाक मंजर हो जाता है कि ये तो खुद का इसका कुछ भी नहीं है. और if by chance they are asking any meaning of the word, you are not able to answer. So again, it's not a good thing. Fine. So these are the different sources where you can review. Then what are the different type of literatures? There are subject specific books. So कोई भी वेरिएबल बताइए. Any student? कोई वेरिएबल बता दो अपना. Academic achievement. So there can be book of academic achievement. Academic achievement पे कोई book हो सकता है. Almost हर वेरिएबल पे you can get the book. It's always, it's not about textbook, but कोई detailed book होगा. Reference books होती है. On any of the topic it's there. Then grey literature. Grey literature is that which is not which is published. कहीं वो publish हुआ है. It is published at that place which is not having ISBN and ISSN. What is ISSN and what is ISBN? किसी को पता है ISBN क्या होता है? कहीं सुना है? कहाँ पे सुना है ISBN? Yes, books, whatever books are there, books are having ISBN number. If ISBN number is not there, so it will not consider into the category of books. Book की category में वो नहीं है. And ISSN is the number for the journal. जहाँ पे भी research paper, you get your research paper published, so there is journal of that research paper. That journal is it should have ISSN. And you know there is a whole racket. इसका पूरा एक racket चल रहा है. बहुत टाइम से चल रहा है. Cloned journals सुना है? Cloned journals. अच्छा, very soon we will be keeping a lecture आप लोगों के लिए, सारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए क्लोन जर्नल्स का एक लेक्चर रखेंगे, तो उसमें आप वो जरूर आपको अटेंड करिएगा. विल प्लान इट बाय, विल सी वेदर इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन. ठीक है? ऑफलाइन. हां, ऑफलाइन. ऑफलाइन. ठीक है, देख लेंगे. ठीक है, हमको तो ऑफलाइन करते हैं, थोड़ा सा एक फोटो अच्छी आ जाती है. लेकिन वो फीलिंग नहीं आती ऑनलाइन. रिपोर्ट अच्छी आ जाती है. हाँ, तो ग्रे लिटरेचर इज दैट व्हिच इज पब्लिश्ड, it is not having any ISBN or ISSN. Then official publication, archives and statistics.
So these things are available in the websites of कोई भी कंपनी का भी वेबसाइट आप खोल रहे हो तो पतंजलि खोल दिया तो उसका पूरा बताएगा कि बैलेंस शीट क्या था एंड इफ यू परचेज एनी ऑफ द टैबलेट और उसमें पूरा इंफॉर्मेशन होता है ना व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स सभी कोई पढ़ता है उसको हाँ पढ़ कहाँ पाते तो छोटा छोटा लिखा है and in many languages it is written na then writing aids huh yes so and this official publications is of government also government का जो statistics सेंसस सर्वे का निकलता है और जो भी और भी इंफॉर्मेशन होती है those things will also come in like I said ना ट्रांसजेंडर का मेरी स्टूडेंट कर रही थी till date there is no data official data नहीं है how many transgenders are there even जो 2025 चल रहा है ना तो 2020 में सेंसस सर्वे हुआ होगा अभी का भी डाटा इज नॉट अवेलेबल कि व्हाट इज नंबर ऑफ थर्ड जेंडर कितना है 2011 का डाटा है तो कितना पुराना है 5 या 11 का तो ऑफिशियल डाटा इज स्टिल नॉट अवेलेबल then journal articles and all they are also source of where we can get the literature देखिए I am not saying it's not authentic it's not having ISBN and ISSN number so it's not coming into the category of that first वो पिछले में था journal और books की category में it's not coming If somebody has done some work, writing a paper, why he did not take the pain of having this I remember. See, what is the reason? What is the reason? See, देखो एक मेरी I did some work and putting my energy, giving my time. I have something which will make me an authentic person, an authentic data, authentic view. See, अभी जो मीडिया का जमाना आ गया है तो दे डोंट नीड सच वैलिडेशन फर्स्ट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल ठीक है मेरी एक फ्रेंड है और उनका जो भाई है ही इज वेरी बहुत इंटेलिजेंट ही इज नॉट हैविंग जॉब प्रेजेंटली तो उन्होंने खुद का वेबसाइट खोला बनाया एंड he has himself developed the website social sciences का स्टूडेंट he has himself developed the website एंड वहां पर वो जो आर्टिकल्स होते हैं जो एक यूथ को यूथ एम्पावरमेंट के लिए और आर्टिकल्स व्हिच आर रिलेटेड विद द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द कंट्री हु विल पब्लिश देयर आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर कोई नहीं पब्लिश कर रहा है एक यंग बच्चा सोच रहा है कि मेरा आर्टिकल न्यूज़पेपर क्यों पब्लिश करेगा उसका or who will read the books but these writing going through these blogs is very much easy for them and वहां पर अब नाउ उसका इतना रीच बढ़ चुका है इतना शेयर बढ़ जाता है वहां पर उसका and ultimately he can get advertisement now what that person want उसको क्या चाहिए people should read his work and कहीं से source of income हो जाए after some and later on थोड़ा fame भी मिल जाए so all three things he is getting from that source so he don't need to go with the book later on uh, he can publish his books later on but when we are talking about current scenarios So the purpose of writing was something different. He did not want it. Yeah. He just want to be authentic. He did not be an ethical person. In the name of it's not like देखो ethical और unethical तो हम लोग ही बनाते हैं ना कोई चीज को like हम फास्ट रखते हैं तो फास्ट में we have made it so much customized कितना कस्टमाइज हमने उसको कर दिया we are eating so many things during the fast तो फलारी and all so we have made it customized अब somebody is saying कि हम लोग फास्ट रख रहे हैं कि हम किसी के लिए बुरा नहीं बोलेंगे that way they are doing तो we are customized हम तो ethics भी हम लोग ethics एक ऐसी चीज है which is not law ethics क्यों separately कहा जाता है it is not the law नहीं बोल रहा है झूठ मत बोलो it is our ethic or moral values हमको बताती है तो that whether that person is authentic or not तो वो तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना इतना सारा व्यूज
पड़ता है, ध्रुव राठी का वीडियो आया, इतना सारा व्यूज बढ़ गया। हम ध्रुव राठी का वीडियो जो है वो पे लिटरेचर है। It's not literature. मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, आई डोंट वॉच वेरी ऑफन, मैं आप दो चार बार नाम ले लिया मैंने लेक्चर में अपना। मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया, उनका मैंने 2-3 वीडियो देखा एंड मैंने विकिपीडिया पे देखा ना, तो ऑल इंफॉर्मेशन वाज देयर, विकिपीडिया पे व्हाटएवर इंफॉर्मेशन वाज देयर इन हिज वीडियो। व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट हिज वीडियो, ही इज प्रेजेंटिंग इट। अब he has synthesized it and he has never claimed कि ये मेरा है, वो हमेशा डबल बात करता है। वो क्रिएट करता है और दिखाता भी। हाँ, वो उसने न्यूज़पेपर पे कटिंग कर दिया, प्रेजेंट करके वे ही इज शोइंग। हम देख लिटरेचर का हम एग्जांपल अगर देंगे तो वो क्या होगा? ब्लॉग्स और मैगजीन्स जो होती है, दैट इज नॉट हैविंग ISBN ISSN नंबर। हाँ, अभी एक ओनली देसी का भी चलता है, एक ओनली देसी एक होता है, दैट इज स्पूफ करता है वो, व्हाटएवर द मूवीज आर देयर ना, उसको वो रिलीज करके बताता है मूवीज में क्या प्रॉब्लम था। लाइक किसी ने सॉन्ग में पहले हाफ शर्ट पहना है, फिर वो बिटवीन द सॉन्ग उसने फुल शर्ट पहन लिया है, वैसी चीजें वो पकड़ के बताता है ओनली देसी वाला। राइट, तो अभी उसका जो लास्ट वीडियो आया था, तो दैट वीडियो ही वाज सेइंग दैट आई गॉट सो मच लव फ्रॉम दी, देन ही शोड कि मेरे को कॉपीराइट वो आ गया, स्ट्राइक्स आया, उसके चैनल पे स्ट्राइक्स थी बहुत। सो जो लोग जिनका होता है, वी आर नॉट मेकिंग डिस्क्लेमर या वी आर नॉट टेकिंग द परमिशन, so they can send strike also हमारे चैनल पे। So we have to take care of all these things also कि कहाँ से कॉपीराइट ले रहे हैं क्या है। लाइक जो सॉन्ग बुक मूवी का लिया है, तो कॉपीराइट का if we are taking any old song in our movie, so it's a big procedure taking permission and we have to give lots of money also. So he has taken SRK का, he has used all the things जो भी उसका सीधे सीधा कितना यूज किया and VFX करके उसको they have presented in a different form. Now that old song everyone has watched that old song also. कि what exactly is there in the old song. उधर उसका व्यूज बढ़ गया एंड यू कैन सी शायद शेमरू का है वो या टिप्स का जिसका भी है, वो 8 मंथ्स पहले फिर से अपलोड हुआ था सॉन्ग इन द यूट्यूब चैनल ऑफ दैट म्यूजिक कंपनी, और उसकी व्यूज इतना बढ़ गया, तो दैट व्यूज इज एन सॉर्ट ऑफ रिम्यूनरेशन ही इज गेटिंग फॉर दैट गिविंग द परमिशन। तो ये सब इन वीडियोस में भी ये सब बहुत ज्यादा चीजें चलती है। अब तो इवन YouTube has said ना कि किसी और का सॉन्ग पे they will not do monetization if the song और content fresh content बना रहे उस पे आपको मिलेगा, right? So these are the type of literature. You can also refer the documentaries जो होती हैं, and government की documentaries are the good example of for this. Writing process of review of literature. So first we need to see do they present one or different solution. So if any paper is having objective, as I said, if we are doing review of any of the paper, that paper is having any objective, that is quite clear that they must be having some different solution also. So वो आपको solution mention करना है. Then is there an aspect of the field that is missing? When you are doing review, you have to think कि क्या इसमें कौन सी चीज missing है. How you will get to know about that thing? Most of the papers or most of the almost all theses are having one point which is future work suggestion for the future, right? वो हम कर सकते हैं and there are limitations also.
In previous class, I have discussed about delimitation. Right now, I am talking about limitation. Limitation क्या होता है? When I complete the work, after completion of the work, there are few things which I know कि हाँ ये problems था इसमें, which was unavoidable. Suppose I am collecting data of all of the participants PhD students का मैं data collect कर रही हूँ. From that collected data, I can say that data is self-reported. Data आप लोग self report कर रहे हैं ना? मैंने आपको एक sheet दी in that you people are putting. So that the data is self-reported. That means you people have given the data. So there are chances कि self-reported data cannot be authentic. There are chances ना? आप you are reporting, you can report it wrong. So that is a limitation which I can't वो crack नहीं कर सकते. So I will mention it. So limitations में भी पता चलता है कि what is missing, where we can work if in future it can be worked, or what can be the future points where we have to focus. वो भी हम limitation gap में we can see how well do they present the material. If you international papers देखेंगे ना, so you will see that they are writing. Suppose they have written one sentence which is having 15 words. So they have given information, 5 word का information they have given. After that they are citing 7 to 8 papers or authors. You getting my point? One sentence is there which may be of 15 words. 15 वर्ड का एक सेंटेंस है, 15 वर्ड्स में कितना इंफॉर्मेशन होगा, है ना? एंड एवरी 5 वर्ड्स के बाद दे आर साइटिंग कि ये 5 लोग ऐसा बोल रहे थे, ये 5 लोग ऐसा बोल रहे थे. दैट मींस एवरी सेंटेंस इज हैविंग 6 to 7 different citations है. एवरी सेंटेंस इज हैविंग. You can see this international papers में ऐसा होता है. Indian papers में it's not there. So citation they are citing it तो ऐसे ही नहीं, they are not writing name like that only. कुछ भी नाम डाल दिया. उन लोगों ने तो रीडिंग किया है, तब बोल रहे कि ये भी ऐसा बोल रहा है. So if you are writing one paragraph, उसमें आप you are giving 50 references in that paragraph. So that shows that you have read 50 words. 50 words आपको read किया है आपने, then you have written one paragraph. So that will increase the credibility of that content, whatever you are giving. So do they portray it according to the appropriate theory, like whatever the method of writing, उसके हिसाब से they are writing it or not, right? And after some time we'll get to know कि किनका पेपर अच्छा होता है, कौन सी. If a good paper is there, you will cite it. इस citation का भी पूरा एक वो होता है. How many citation one person is getting, one paper is getting, कितना citations उसको मिल रहा है, कौन सी country से citations मिल रहा है. All these things are the part. Do they reveal a do they reveal a trend in the field, or whether the paper is creating a raging debate on whatever area we are working. So अगर debate raise हो रहा है तो don't think it's a bad thing, it's a good thing. You can find different areas where you can explore things, but you have to take care कि आप ऐसे नहीं कि कहाँ से start कर रहे हो and then you are ending up. You should stuck to your variable. You have to take care. So construct a working thesis statement, which is very important. This is very important. So it's not like that कि always suppose आपने सोचा कि I have to work on this topic, so you have framed the topic. Later on you will change it. Don't think it should be वो stuck हो गया है. You can change it later on. You can change the abstract also. Fine. Flexibility you have to keep it. Consider organization. You should take care that there should be an effective way of presenting the information. Important topics and subtopics should be there. Order of presentation and national and international. ये भी पूछा जाता है कि whether your thesis is having any national work or international work is there or not.
because you have to take care if you are only presenting international work also, because it's not necessary whatever is being there at the international level, same thing or in same context, it can be applied in the Indian settings. It's not necessary. So you have to give justification also for that. Like I said, na, okay, my work was first work in India related with my variable. Academic buoyancy पे मैंने काम किया था. So that academic buoyancy, when I submitted my thesis, na, so Indian work, I got 2 or 3 Indian work by that time. That because 2 other people were also doing. Like during 5 years, I got to know few other people are also doing the work. 2-3 लोग ने काम किया था. Their paper was also published. Even but my thesis got uploaded first, and my thesis was awarded first before them. Okay, so I can say that in India it is my first work. I have created मैंने एक tool बनाया था, academic buoyancy scale बनाया था. That was also the first work in India. So those people have used the already existing tool जो था वही use किया था. बहुत छोटा काम था. But I got एक दो मेरे को research paper मिल गया to show that Indian work is also there. But I have to prove at the same time कि why I have taken only international. So Indian settings में what मेरा काम कैसे different है from that. मैंने पूरा उनका borrow नहीं किया ना. I have done, मैंने अपना भी उसमें mixing किया. So why I have taken those variables. अभी एकेडमिक वर्ल्ड या एकेडमिक जो स्टूडेंट्स पे प्रेशर है, वी ऑल आर अवेयर इट इज डिफरेंट. ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट होगा, इट मस्ट बी डिफरेंट इन दैट, उस पे प्रेशर डिफरेंट होगा और इंडियन स्टूडेंट पे डिफरेंट होगा. वी ऑल आर अवेयर ना. सो इट what demographic we are having, what culture we are having, so there is a difference in that. So we have to consider those things also. Then so you have to keep national and international both. Then cover the basic categories like introduction and background of the information. So अगर आप सोचेंगे कि मैं introduction से start करूँ तो it is possible नहीं होगा. Okay, you will start with the introduction. The introduction you can do it later on. You need to place it at the first. But first you have to start with. सबसे पहले किससे start करेंगे? पेपर लिखना है, whatever आपको काम start करना है, you start with what? Abstract तो हम क्योंकि मांगा जाता है तो हम submit करते हैं. We should not first work on abstract. Review पे सबसे पहले काम करना है. And when you will do review, na, again I am saying there is a difference in writing the review and doing it. Now you should focus only on doing it. Writing हो जाएगा आप लोगों का आराम से. If you are doing it properly, na, writing can be done it very easily. So you have to do review. You will get to know different objectives. दूसरे का methodology. Then you can plan your objectives. Research gap लिखने के बाद you can plan your objectives. क्या है ऑब्जेक्टिव जब लिख लोगे देन इन बिटवीन आल्सो यू गेट टू नो द नीड एंड सिग्निफिकेंस. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग दिस टॉपिक वर्क, क्यों कर रहे हैं हम, है ना. जब दूसरों का नीड एंड सिग्निफिकेंस देखोगे तो ऐसे नहीं करिएगा कि लाइक कॉपिंग वन फ्रॉम ईच ऑफ द रिव्यू, वन नीड एंड सिग्निफिकेंस फ्रॉम ईच ऑफ द रिव्यू. ठीक है, डोंट गो लाइक दैट. You should need and significance should be done from your heart. You won't be able to present it. It's a very bad situation when we during the viva वो बोलेंगे reading मत करिए, बहुत खराब situation होती है. Then writing process और हाँ, now we have done reviews, हमने बहुत सारा reviews कर लिया. Fine, we have noted 5 to 6 points, major points. I have told you that you have to need to write those things. ये summarized way में. You have to write it in a summarized way. About the title, so you can twist it. They have worked in this thing. In your what was the sample population, target group, in which city it was done,
देन मेथोडोलॉजी इन वन लाइन, डिजाइन क्या था वन लाइन में, टाइप ऑफ रिसर्च क्या था, अप्रोच क्या था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, एंड देन what was the result, conclusion or findings, right? Or suggestion, you can write it in one sentences or two sentences. Now you have done, suppose you have done 50 or 100 reviews आपने कर लिया अलग अलग. Now you need to present it. What you have to do, you have to do it in chronological order. तो ascending में करना है कि descending में करना चाहिए? ascending में. तो लेटेस्ट ईयर पहले आएगा कि बाद में आएगा लेटेस्ट ईयर? लेटेस्ट पहले आएगा, राइट? और कितने साल का रिव्यू करेंगे आप लोग? हाँ ठीक है, 10 5 थोड़ा कम हो जाएगा. And again it depends on the field in the area which you are doing. But I told you कि you have to refer your old books also. तो फिर वो कहाँ से देखेंगे? उसको कहाँ कोट करेंगे? उसको कहाँ कोट करेंगे? You can't summarize ना, पूरा बुक को summarize करके कैसे लिखोगे? ये पूरी बुक में ये था, that is not possible ना कि इसको एक पैराग्राफ में लिख सके. So while writing introduction of your thesis, you should quote old references also. पुरानी बुक आप अपना बेस बताएंगे ना. हाँ, इंट्रोडक्शन में कहाँ से कहाँ बात लेके जानी. सपोज आई मेरी लैंग्वेजेस से भी तो आई आस्क, मैं अपना चैप्टर 1 आई वाज प्रिपेयरिंग, तो आई आस्क देम कि मुझे लिखना है कि पुराने जमाने में लोग कहते थे फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू प्रेजेंट. तो आई आस्क करके इसको मैं कितने पेजेस पे लिखूं कि प्रिमिटिव मैन ऐसा था ना, उसके बाद टेक्नोलॉजी आई एंड ऑल सच थिंग्स हैपेंड एंड प्रेजेंटली दिस इज द स्टेटस. आई आस्क कि मैं उसको कितने पेजेस में लिखूं. she said write it in 2 sentences. उसको 2 सेंटेंस लिखो. समझ गए? हम सोचते बहुत हैं, बट only 2 sentences are enough to write. And I need to मैंने उसमें रेफरेंस डाला कि ये मैं कहाँ से कोट करूँ. ये चीज मैं इफ आई एम राइटिंग एनीथिंग तो कहाँ से, तो वहां पे हम ओल्ड बुक्स लेते हैं. ठीक है, लाइक आई सेड कि मेरा टॉपिक एकेडमिक वॉइसी था, तो फर्स्ट आई नीड टू एक्सप्लेन वॉइसी क्या होता है. एंड वॉइसी इज प्योरली साइंटिफिक साइंस का है पूरा. एंड इन माय थर्ड आरडीसी मेरे को पूछा व्हाट डू यू मीन बाय वॉइसी, आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. आज मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, उन्होंने बोला टॉपिक चेंज करो. उसके बाहर निकल के उनको बोलते वो ऐसा था वो ऐसा था और रोना स्टार्ट करते. तो मेरा तो प्ले बैक करा है और घर में ये वो और रात को काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. आपने रात को कितने बजे तो काम किया, कुछ नहीं. नोबडी इज बॉदर्ड. इवन चिल्ड्रन आर नॉट बॉदर्ड. एवरीवन नीड्स आउटपुट. सबको रिजल्ट चाहिए ना. जब तक आप लाइफ में रिजल्ट देते जा रहे हैं, यू आर गुड. बस दिस इज द लाइफ. ठीक है, सो यू हैव टू अगेन सी थीमेटिक रिव्यूज ऑफ लिटरेचर. मेरे को रिव्यू पेपर लिखना था ना, तो मैंने एक फार्मेसी की मैम को अप्रोच किया. मैंने बोला मैम मुझे बताइए हाउ आई हैव टू राइट द रिव्यू पेपर. तो शी सेड कि पहले आपने रिव्यूज सब कलेक्ट कर लिए. नाउ डिवाइड द रिव्यूज इन डिफरेंट थीम्स. I did the work on demographic correlates. Academic buoyancy और demographic correlate पर मेरे को काम था. Now there are 50 work already existing 50 works है. That 50 works are being done in different areas पे हो रहा होगा ना. Academic buoyancy को psychology के साथ कनेक्ट किया, उसको physical के साथ कनेक्ट किया. Academic buoyancy हाई स्कूल के बच्चे के साथ किया. They did with undergraduate students, they did with science students, they did with international academic buoyancy को स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट किया, सबके साथ कनेक्ट किया. Right? So there must be some common. Undergraduate students की 5 थी researches, स्कूल के स्टूडेंट्स का 10 था. तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थीम्स आई नीड टू डिवाइड इट.
रिव्यू पेपर में यू कांट गो लाइक दैट ओनली के मैंने उसकी रिव्यू किया एंड एनीवेयर आई कैन कांट प्लेस एनीथिंग. मेरे को ये बोलना चाहिए ये सेट ऑफ रिव्यूज आर कमिंग आर कमिंग अंडर दिस थीम. ये सेट ऑफ रिव्यूज आर कमिंग अंडर दिस थीम. ये सब इसकी थीम में आ रहा है एंड देन आई एम डूइंग वर्क ऑन पर्टिकुलर दिस थीम. दिस इज अ रिसर्च गैप. ऊपर वालों ने किसी में भी ये चीज नहीं की. ग्राउंड वर्क थ्योरी नहीं हुआ है या फीमेल कंटेक्स्ट में नहीं हुआ है. ये सब मैंने कर सकते हैं. देन ओनली जब डिफरेंट थीम्स आर अवेलेबल देन ओनली वी कैन से हां इस एरिया में काम नहीं हुआ. वहां पे हुआ है तो यू शुड चेंज द वेरिएबल और यू शुड चेंज द टारगेट ग्रुप चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज मेनी थिंग्स इन योर वर्क. तो रिव्यू करने से आप विल गेट द कॉन्फिडेंस. सो दिस इज थीमेटिक एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच. रिव्यू लिखने का अभी मेथड हम लोग आ रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे विल कम. ठीक है. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ राइटिंग द रिव्यूज. सो ये जस्ट recommended for writing a good literature review. Review should be relevant. अभी आपको पूछा जाएगा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा. What that बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं. If I am asking some, if we are asking something ना तो they answer something else. So you should be very much clear कि what the other person is asking. तो पैनलिस्ट में दैट आरडीसी पे जो बैठे हुए हैं वाइवा में व्हाट ही इज आस्किंग यू हैव टू गिव आंसर टू दैट ओनली. सिमिलरली यू शुड मेंशन ओनली रिलेवेंट रिव्यूज. अभी एक किसी की थीसिस थी. थीसिस का टाइटल था टीचिंग एफिशिएंसी. थीसिस में टीचिंग एफिशिएंसी था एंड teaching efficacy था. efficacy and there was no scale of teaching efficacy. She has used the scale of teaching efficiency. efficacy के बदले efficiency यूज किया उसने. और एक और teaching attitude towards teaching का कुछ था. She has changed whatever was there in the title. title में जो था वो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसका रिव्यू हाउ शी कैन गेट द रिव्यू ऑफ दैट. If that word is not existing, उसका मन से वर्ड बना दोगे तो कैसे चलेगा. कोई भी मन से बना दिया that is approved. Now from where you get the review? वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उससे रिलेटेड दूसरे वर्ड का बना दो. दिस इज नॉट अ गुड आइडिया. ये नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो यू शुड डू ऑल रिलेवेंट रिव्यू. राइट क्रिटिकल एनोटेशंस व्हाइल गोइंग थ्रू वेरियस रिव्यूज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज थिंग्स क्रिटिकली. क्रिटिकल क्या होता है. क्रिटिकली एनालाइज करना मतलब क्या होता है. उसको दूसरे एंगल से भी देखिए. व्हाटएवर आपका खुद का भी तो कुछ ओपिनियन होगा ना कि ऐसा तो नहीं है कि लाइक अ फुटबॉल ऑफ एनीवन्स फूड स्टेप. इसका मतलब क्या होता है. फुटबॉल क्या होता है. जहाँ पे उसको मारेंगे तो चला जाएगा वहां चला जाएगा ना. फुटबॉल का खुद का क्या ओपिनियन होता है. तो वी शुड हैव आवर ओन ओपिनियन एंड वी शुड क्रिटिकली सी कि व्हाट एल्स कैन बी डन फ्रॉम दिस. उसमें से क्या हो सकता था कि क्या कर सकते थे. राइट. देन टू डेवलप अ स्ट्रक्चर टू राइट पर्पसफुली. हाँ टू राइट पर्पसफुली. अब when you read purposefully then only you will be able to write purposefully. You know what, you can write a very good paper without generating any new idea if you are reading 10 good papers. उसको बहुत अच्छे से thoroughly you have read those papers several times. You can write your own paper by combining it. So to have writing as an art you should first read. Then use the literature to support the argument. Make literature review an ongoing process. This is what I said. पहला क्लास में मैंने ये बोला था
it is an ongoing process. So if you are submitting your thesis in 2028, 29, तो 29 का रिव्यू तो अभी तो नहीं करेंगे ना. Now तो you do 25 का रिव्यू. You have to do it in 2029 also. You have to do it with you. Get plenty of feedback. Remain open. Feedbacks के लिए हमेशा open रहिए. अगर कोई आपका काम रीड करके if someone is suggesting anything, be thankful to that person. Be thankful to that person कि they have suggested you. They have given time to your work. They have read your work and suggested you. And एक ट्रिक हमेशा फॉलो करिएगा. Whenever you go for your RDC और ये वाइवा के लिए, तो always carry a plain paper and pen. If they are suggesting anything ना, start writing. So they will not अगर if they are in mode of criticizing ना, they will stop. They will come into the mode of suggesting. वो suggestion के mode में आ जाएंगे लोग, है ना? Because you are आप receive कर रहे हो. Remain prepared for redrafting. क्योंकि you are just a beginner. तो redrafting के लिए ready रहिए. जितना ज़्यादा redraft करोगे, उतना ज़्यादा you are making yourself more acquired and doing it properly. Now these are the different methods. This is not there in your course, okay? But it's there in your PhD. Bibliometric analysis, meta-analysis, and systematic literature review. If you are getting, जरूरी नहीं है. All of your guides are very much point with the latest technology going on. So don't feel proud if you are aware of the technology कैसे यूज करनी है क्या है, ठीक है? तो उसमें बहुत आपको ऐसा नहीं बहुत प्राउड हो जाए कि I am aware of these things and all. So bibliometric analysis is one of the things which is बहुत लेटेस्ट तो नहीं है, but yes it is latest and इससे बहुत अच्छा पेपर बनता है, ठीक है? ये you can write, you can give your presentation. अभी उसको खोल के दिखाइए गूगल में जाके, अभी बता रहे हैं, ठीक है? अभी टाइम है, हाफ एन आवर है. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग. इफ यू बट कंसल्ट विद योर गाइड कि ये एक सही तरीका है कि नहीं. व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इट, when you're presenting your this first RDC, you can apply this way, but first you have to consult your guide, है ना? जैसे हर दवाई पे लिखा रहता है ना कि आप फिजिशियन से कांटेक्ट करें बिफोर टेकिंग, तो प्लीज आपने फिजिशियन से कांटेक्ट करिएगा. तो ऑथर्स यू कैन राइट हियर टाइटल ऑफ द स्टडी. ये प्रेजेंटेशन है. दिस इज नॉट योर चैप्टर 2. how you have to present your say first RDC. Objectives क्या है? Methodology, findings, limitations, and funding agencies. Funding agencies are very important because those who are feeling that after PhD they'll get a good job, so life will be more difficult after PhD, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे PhDs भी होते जा रहे हैं. So don't think it's एक बस एक पड़ाव होता है आप लोगों का. You have to clear that thing. So फंडिंग एजेंसीज को भी फोकस करके चलिएगा. जाए नेक्स्ट स्लाइड पे.
हो गया। ये एक्सप्लेन कर रहा है अभी, इसको एक मिनट देखिए। ये सब अवेलेबल है, अभी ये पेपर खोल के दिखाइए आप लोग को। I show the paper. Bibliometric analysis is a way of doing review literature. There is one software. हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू we used to do the reviews. अब पहले इसको समझ लेते क्या है, then I will show one paper and एक डेमो करके दिखा देंगे क्या है। And it's not necessary, अभी आप लोग यहाँ पर कर पा रहे कि नहीं, it's not necessary. There are many YouTube videos, you can follow those videos, उससे you can download the software and you can do it yourself. It's not that difficult, but it's good. But you have to do it properly, you have to take care. So what is that? Bibliometric analysis, it summarizes large quantities of the bibliometric data to present the state of intellectual structure and emerging trends of the research topic or field. So when there is a large quantity of data, bibliometric का मतलब क्या है? It's a name of that particular method of doing review. Review का नाम है उसका. bibliometric data. अच्छा, bibliometric data. See, there are sources of data जहाँ से हम data ले रहे हैं. So there WOS का data होता है, Web of Science. Web of Science की journals होती है और Scopus की journals होती है. Fine. Then वहाँ से हमें बहुत data मिलता है. There are many journals which are registered under that Scopus and Web of Science. बहुत सारे journals उनमें है registered है. Fine. So from Scopus we can get the data. Similarly, there are different such, जैसे Web of Science हो गए, Scopus हो गए, there are few other sources also from where we can get the data. Data of what? Data related with your variable. कि what are the papers? What are the different papers are there? Research papers are there related with your variable. उससे हमको पता चल गया कि there are 5,000 papers, 10,000 papers, या आपको कितना 2,000 चाहिए, within what range you want, we can download that data. I will show you अभी. After this, I'll show you कि वो data कैसे download करते हैं. तो Scopus में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का है, you can take it from आप घर से थोड़ा सा टेक्निकल होके मुश्किल से निकलता है, but आप यूनिवर्सिटी में है तो with the internet of university you can open the, you can download that data. वो डाटा के बाद हम लोग उसको एक सॉफ्टवेयर पे लगाते हैं, तो इट समराइजेस द डाटा. लाइक वो बताएगा कि सपोज 2,000 पेपर्स है, तो इट विल शो के which country is having maximum papers. कि ऑस्ट्रेलिया के 1,200 पेपर्स थे. कोलैबोरेशन ऑफ कंट्रीज बताएगा. फाइन. तो अभी आई शो यू दैट पेपर आल्सो आफ्टर दिस. ठीक है, वी आर हैविंग टाइम. इट्स दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर यूनिट. ठीक है, यहाँ पर जब कोर्स वर्क की क्लासेस में आएंगे ना, तो डोंट थिंक कि आपको यूनिट का पढ़ना है. आप सोचिए कि जो पढ़ा रहा है ना वो अपने एक्सपीरियंस से कौन सी नई चीज बता रहा है. तो YouTube पे बहुत पढ़ सकते हैं आप लोग, और एग्जाम के एक दिन पहले तो पढ़ोगे सारा, है ना. हाँ, उसी दिन भी पढ़ते हैं. लाइक एग्जाम इज फ्रॉम 2 o'clock, तो हम सुबह से भी पढ़ते हैं, ऐसा होता है. लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में होगा एग्जाम. ठीक है, सेकंड शिफ्ट में नहीं होगा. सो आप लोग एक दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करिएगा. ठीक है, तो कुछ ऐसा सीखिए जो नया हो.
बिकॉज कोई अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता रहा है तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल. फाइन. सो when so must understand this thing, when large number of data is there, we go for bibliometric analysis. We can go for that. Then meta-analysis is there, summarizes the empirical evidence of the relationship between the variables while uncovering relations not studied in the existing study. वो बता रहा है कि suppose we are having 500 papers, so it will talk about what are the मेजर रिलेशंस में किसके स्टडी हुआ है, कौन डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में स्टडी हुआ है, एंड विच वेरिएबल्स आर इग्नोर्ड और जिस पे बहुत कम स्टडी हुआ है. यू कैन it would be better to finding the research gap. Finding the not research gap, you can find research trends में क्या चल रहा है, you can go with that. हमें वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है. सपोज आई हैव आइडेंटिफाइड वन वेरिएबल, आई एम लुकिंग फॉर अनदर वेरिएबल, तो जिस पर कम काम हुआ आई शुड गो फॉर दैट ना. तो मेरा टॉपिक सिलेक्शन के लिए दिस कैन बी हेल्पफुल. एंड रिसर्च गैप तो आप अपने वेरिएबल्स ऐड करेंगे, देन यू विल गेट टू नो द रिसर्च गैप. ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बता रहा है कि क्या हमारा रिसर्च गैप नहीं पता चलेगा, एग्जिस्टिंग पता चलेगा. देन सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इज नॉर्मल व्हिच आई सेड के we'll write one topic, then we are writing methodology sample, एक पैराग्राफ में we have written, that is your systematic literature review, ऐसे आप कहते हैं उसको. So when the scope of review is broad, when the data set is too large for manual review, we go for bibliometric analysis. When the scope of review is specific, if we have to do the case study sort of thing, we will not go for this thing. When the data set is small or manageable, we'll go for systematic literature review. Again the same things are there. यहाँ पर quantitative analysis हो रहा है और qualitative हो रहा है. इधर सिर्फ it's major it's qualitative because we are giving our own, we are writing in our own way. Findings we can't write everything, we can't write according whatever is written in that paper. Plagiarism आ जाएगा. So हम let's go for one paper. इसको पढ़ना है कि directly we should go for the paper. It's the statistical analysis of the data commonly focused on citation, analysis of research output and publication. So it's talking about already which is being published और cite किया हुआ है, research output जो है उस पर it will do analysis on that basis. Just a second. Few students online भी बैठे हैं ना, तो we have to see कुछ comment आया है, कुछ anything they want to see. So it is used to provide quantitative analysis of the academic literature. Numbers में वो बताता है पूरा. Citation analysis is commonly used in bibliometric method, which is based on constructing the citation graph and networks. चलो let's come to the paper. एक bibliometric analysis का will do one paper. We'll see one paper. गूगल पे नहीं गए, गूगल स्कॉलर पे गए. गूगल स्कॉलर पे डायरेक्टली हमें चीजें मिल जाती है. रुकिए मेरा दूसरा अकाउंट है. Rather than putting Google, we can put Google Scholar. पेपर आपको जाना है. हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग अकाउंट इन रिसर्चगेट? रिसर्चगेट पे प्रिपेयर योर अकाउंट इन रिसर्चगेट. You can approach the यहाँ पेपर नहीं मिलता है, पेड पेपर है, तो डायरेक्टली यू कैन अप्रोच द ऑथर्स एंड यू कैन गेट दी, दे विल सेंड यू द पीडीएफ. वहाँ पे भी अच्छे कनेक्शंस हो जाते हैं. लिंक्डइन पे तो हम सबको ही ऐड करते हैं 500 प्लस जाने के लिए, फ्री हो जाए हम लोग का. तो वहाँ पर भी मे बी इट माइट हैपन दैट यू डोंट नो एवरीवन.
बट वहां पर भी यू कैन सर्च पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट जिन्होंने उस टॉपिक पे काम किया है. देन यू कैन सर्च पीपल ऑन एकेडमिया. यू कैन सर्च योर कंटेंट ऑन पबमेड पे भी ले सकते हैं. पबमेड को साइंसेस के लिए, और साइंसेस वाले और तो क्या काम में मिलेगा डाटा, साइंस डायरेक्ट. यस. और क्लाउड प्लीज, एसीएस. और एजुकेशन वाले यू कैन गेट इट फ्रॉम एरिक ऑल्सो. गूगल स्कॉलर में सब लोग को मिल जाता है बिकॉज एवरीवन यूजुअली अपलोड देयर थिंग्स ऑन गूगल स्कॉलर. फोकस पे कैसे ढूंढेंगे आई तो. सो हमें क्या ढूंढना था, पेपर ऑन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस. Now one paper is there, how to conduct a bibliometric analysis. Fine. देखिए software for conducting. Now see this green supply chain management. This is the variable green supply chain management. This is the variable. उस variable पर review and bibliometric analysis is done. When it is being done? 2015. बहुत पुराना है, 10 years पुराना. This review is 10 years old. So let's search the latest one. Bridging informatics with science. कौन सा सब्जेक्ट है ये? Which discipline? Which discipline? Science है. Which discipline? कौन सा डिसिप्लिन है? फिजिक्स है, बायो है, क्या है? बायो, computer science. What is this? See, unveiling sustainable practices in financial institution. ये this is commerce and management. ठीक है? Application opportunities and challenges in the digital technologies in decarbonizing shipping industry. Chemistry क्या है? ये कंप्यूटर साइंस है. हाँ, marine engineering. Yes, greenwashing in marketing. ये सब 2025 के पेपर है. ये लोग they have done bibliometric analysis of their variable, right? Now you can search your variable bibliometric analysis. If it's already done, then your top variable is quite old. ठीक है? You have to consider this thing also. Multi-target assignment problem. HR का होगा ना? कौन सा खोले पेपर? ये which one? देखो यहाँ से साइड कर सकते हैं. So this paper पहले तो we have to see whether this paper is available. पूरा PDF डाउनलोड होगा नहीं है. ठीक है, परचेज इज दिस, परचेज है. जस्ट अ मिनट. अरे ये इंटीग्रेट अकाउंट से लेट मी सी ना whether I can open it or not. This content is being not subscribed. ठीक है? Subscription वैसे we are having good subscriptions. Like when you study this paper 2 ना, तो 3 यूनिट है वो राजस्थान लेंगे, which is all related with all these things. How you can आप घर पे बैठ के कैसे रिव्यू करो सब पता चलेगा आपको. ठीक है? So ये ओपन नहीं हो पाएगा.
Okay, we can use this site. हाँ ये site है ना, यहाँ पर ये जो site है ना, so you can directly use this site to paste the reference. Reference को हाथ से लिखने का जमाना चला गया. कि APA में चाहिए आपको किस फॉर्म में चाहिए? ये वाला देख लेते हैं. ये भी पता नहीं, I don't know. Now see, we can देखो access provided by IncludeNet. वो IncludeNet पूरा डिटेल और राजेश सर will explain, right? So this is the paper. Let's see what is there. This paper. See, you can see ना. ये देखिए यहाँ से he has started with the citations. देखिए कितना सारा citations किया है. You can see still it's less. Indian का है पेपर. Citations to logical नहीं यहाँ पर in the text you can't write it chronological order. वो तो जो content आएगा you write accordingly. At the end it is alphabetically. Now this paper is Indian style paper. Still you can see so many citations are there. लेकिन international paper में you can see more. This paper is having research questions. What research questions are there? Which authors and journals have published the most articles on organization innovation? Which articles have the most impact based on citations? Which author affiliated countries and institutions have the most positive
productive authors, sorry. What are the keywords and conceptual structures? What critical factors affect organizational innovation? What are the examples of critical factors? Now 5 और 6 है ना, 5 और 6 वो जो है वो उसके एनालिसिस पे आएगा ये आंसर्स. बाकी सब 1 to 4 जो होगा मे बी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से आएगा. ठीक है, लेट्स सी. Now see, this is the process they have done. ये process बताया इन्होंने, fine. They have, first of all, they have identified it from the scopus. Fine, इतना articles मिला. Articles screened, articles sought for retrieval, and article maybe assessed for eligibility. An article included in the reviews. Now see, this data is there, na? This is finding. This is not they have done. ये manually नहीं किया. ये software ने किया है सारा. Right? इतना नंबरिंग कहाँ? कुछ भी नंबर लगा के बना दोगे अपना खुद का तो ठीक है ऐसे. ये they have done it with the software. Cost viewer से किया है. This is also. These are the tables. I am looking for the graph. मैं कुछ ग्राफ ढूंढ रही हूँ वो मिल नहीं रहे इसमें, but these are the tables. Now this is the table. What it is showing that the top author affiliated countries में यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, है ना. सब कंट्रीज का दे हैव रिटन कि कहाँ से क्या आया है और व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस. क्लियर. Now what are the different keywords? Keywords इतने सारे पेपर में कौन सा कीवर्ड रिपीटेड है? इनोवेशन इज दी occurred 50 times. Knowledge management, dynamic. This way ये कीवर्ड में सबसे ज्यादा कौन सा कीवर्ड चल रहा है? तो सबसे ज्यादा चलने वाला कीवर्ड आप लोग को डालना चाहिए कि कम चलने वाला डालना चाहिए? Because when people will search ना तो कीवर्ड के बेसिस पे सर्च होता है. See, I was looking for these graphs only. ये सब ये हाथ से नहीं बने सर, वो सॉफ्टवेयर में बने हैं. आप when you do the review of your topic and you can tell ना कि देखो innovation word has come maximum. ग्राफ बता रहा है ना. Let me zoom in. Just a second. See, one of the table was showing के maximum keyword co-occurrences किसका सबसे ज्यादा है. तो they got to know कि innovation keyword occurred 50 times in these many papers. Whatever the papers का भी chart was there ना. तो उसका graph is being prepared and it is being prepared. ये सब सॉफ्टवेयर से बना है. सॉफ्टवेयर ना वो फर्स्ट व्यूअर होता है. अभी इसको थोड़ा चला के दिखा देंगे आप लोग को. Then factors also उसमें analyze they have done. जो factors का था 5th and 6th research question. Now this paper was having only one graph. Fine. एक और पेपर में दिखा देती हूँ आप लोगों को.
Just a second, let me see if now see ये such graphs are being prepared. ये तो manually बनाया था. See this. This is showing authorship of as per the documents published. ये अभी समझ नहीं पाएंगे आप लोग. See, studies with maximum number of citations. ये ना, it is showing studies with maximum number of citations. तो ये इनका सबसे ज्यादा citation इनका और इनका. ऐसे आप लोग मैन्युअली करने जाओगे तो यू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन. ठीक है, बट when we are using it, when we are having large data, so we can get good summary and these pictures. It is a very good presentation with these pictures. See citations per country. So यहाँ पे देख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का citation सबसे ज्यादा है और कनेक्शंस भी है. So there are many options available for finding this. बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एक मेथड है और बॉस व्यूअर उसको करने के लिए टूल है. हाँ, yes, and it's not difficult, but you have to take care of, you have to study good papers कि how they have done it. ऐसा नहीं है कि खाली पिक्चर लगा दिया और हो गया. उसका एनालिसिस भी दिया हुआ है and table is also there. So all you can get from that software and वो आप कोई भी Google YouTube वीडियो से you can learn how you can download it. ज़्यादा difficult नहीं है. See, this way you can have different clear. Now let me show you how we can download the paper content from Scopus. I hope अभी हो जाए. ठीक है, let's see. तो इसकी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी हम लोग. हाँ, आप लोग का स्टूडेंट आईडी IUL से यू कैन क्रिएट. तो स्टूडेंट IUL आईडी इज देयर ना, so you can log in that. हाँ, so डिग्री यूनिवर्सिटी के डाटा they have the subscription, so we can download. घर पे आप लोग नहीं कर सकते. मतलब एक तरीका से कर सकते हो कोई भी, बट अभी आप लोग यहाँ पे आके करेंगे with your ID only. तो कोई मुझे अच्छा वेरिएबल बताए जिसका डाटा सर्च करें. नहीं, ऐसा थोड़ा और रनिंग. रिलीजियस टूरिज्म. रिलीजियस टूरिज्म. रिलीजियस टूरिज्म एक वर्ड वाला. स्टार्टिंग में एक वर्ड वाला पड़ेगा ना. नैनो पार्टिकल्स. ठीक है, वो तो वैसे कॉमन है लेकिन चलो कर लेते. सस्टेनेबिलिटी पे ठीक है, चलिए देखते हैं किसी पे करते हैं. ठीक है, सस्टेनेबल. नाउ सी इनका डॉक्यूमेंट्स मिला. कितना है, काउंट करो कितना है. 688 566. तो अब हमें वी नीड टू फिल्टर इट. ठीक है,
रशियन लैंग्वेज ले लिया है। Reset. सो सी यहाँ पर रेंज है, नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट ईयर ना, देखो इट्स हैविंग डेटाबेस फ्रॉम द ईयर 1900 से, तब तो देन चलो लेट्स टेक इट फ्रॉम 2020, right? That means last 5 years we are taking. तो देखिए लास्ट 5 years में भी 4 लाख है, 4 लाख है ना, previously was 6 lakh na? That means you can see that 2/3 of the work is being done in last 5 years. So there are many other filters also. Let's take only 1 year, ठीक है, 2025 लेते हैं। Approximate 1 lakh papers 2025 में they have been published. Now there are another this filter like branch of knowledge कौन सा लेना है आपको, तो सस्टेनेबिलिटी को किसके साथ लें बताइए। सी डेंटिस्ट्री के साथ सबसे कम काम हुआ सस्टेनेबिलिटी का, only 69 papers are there with dentistry. Neuroscience, see, and I feel these things in future तो सस्टेनेबिलिटी के साथ ये चीजें अफेक्ट करेगी। हेल्थ प्रोफेशनल्स, then ये कितना कम है डेंटिस्ट्री के साथ, only 69 papers आते हैं। So arts and humanities only 230. Future में तो I think these things only will affect sustainability, अगर it will not continue in proper way, then these things will affect neuroscience के साथ। let's see, now ये पूछता है कि exclude करना है कि limit करना है आपको, तो we are limiting, that means हम इसको ले रहे हैं, exclude करेंगे that means removing this thing we are taking others, so we are limiting it. So let's see, ये 69 papers आ गए होंगे। Now we have to see whether we have to take conference papers, articles, or review paper, book chapter, editorial letter, short survey book, whatever. So let's take articles. Then it is also asking other things also, ठीक है, जर्नल का टाइप क्या है, तो जर्नल पेपर क्या है, कंट्री और फंडिंग स्पॉन्सर, these are organization, which university, so such information it's giving. So let's see, so we got 165 documents. Now we want to export the file.
So we are exporting it as CSV file. तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गया है. I have selected all. That selection was related with के you have to download, keep the complete paper. You have to keep the keywords, extract, all such things were there. ठीक है, वो जो हमने सिलेक्शन किया ना, मेरे को फाइल डाउनलोड हो गया होगा. Now see, because I have selected all na, so now it's downloading the whole documents. अभी I'm already having few files. उस पर I'll show you because this is downloading the whole document. पूरा document download करना है, वहाँ पे section में आना है, तो I'm not able to see which things I have to check. Let's see हो रहा है कि नहीं. ठीक है. Now I'm दिखाई दे रहा है आप लोगों को. यहाँ पर I am writing scopus file. ठीक है. I have to see कुछ होगा मेरे उसमें. Desktop. Randomly I am opening. मुझे नहीं पता क्या निकल के आएगा. ठीक है. होगा कि नहीं होगा. So any CSV file I have selected. Now तो पूछ रहा है कि what type of analysis you want. So for one analysis, suppose co-authorship I want to see. Fine. Authors countries की co-authorship. Minimum number of documents per country 3 होगा, then it will take. ठीक है. So let's see क्या है. It will be very small figure. Let's see what it is coming. Okay, only 3 countries were there. जो डाटा मैंने लिया वो बहुत कम था, बहुत कम डाटा था, इस वजह से. So this graph I am getting. Let's we choose another file. तो इसी में देखते हैं कुछ authors. Yes, it's coming something like this. ठीक है. Now this is showing the connection. ये दोनों author का connection है. See, this way authors का क्या collaboration है, it is showing like this. So it is showing that majorly how many authors you can see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 authors were there which are at least connected with one. That means वो database I have not checked कितना था. Suppose the database of suppose वो must be having suppose 500 files.
So out of 500 files made, there are these 12 authors are there which are connected to other authors in one way or the other way. One minimum one connection is there. Somewhere it is 2 or 3 or इस तरीके से, but minimum one connection is there. Clear? So this way it is showing. So you can refer few papers of these kind, and you can also have your review like this. So it's not difficult, but you have to read it properly how the work already has been done, and accordingly you will do. Clear? Anything else? कुछ क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है? टाइम हो गया जाने का. हाँ अभी. Any question those who are online? Okay, so I'm ending the stream. Thank you very much. Ma'am, can we get the online? Just a second.